अभी आपके कज़न प्रियंका चोपड़ा उनकी मैरी कॉम लगी है, तो आपने वो मूवी देखी है? अगर देखी तो आपको कैसी लगी? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आदित्य इसलिए हंस रहा है क्योंकि मैंने ये पिक्चर नहीं देखी है अभी तक। आई एम सो सॉरी। लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हुआ जाने के लिए, क्योंकि ये भी मार्केटिंग की गलती है। रफ़ीक, आंसर देयर क्वेश्चंस। दे हैव नॉट लेफ्ट अस ऑन टाइम। हम लोग बहुत लेट फ्री होते हैं रोज़, तो वी हैवन हैड द टाइम टू एक्चुअली गो एंड वॉच द फिल्म। बट आई विल सून, आई विल रियली सून। आदित्य, बॉलीवुड में स्टैब्लिश होने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? ये तो बहुत सीरियस मैटर है। स्ट्रगल तो Tell करना us your पड़ा। struggle. नथिंग कम्स इजी। मैं वीजे था फॉर 4.5 years एंड एट दैट टाइम आई हैड नो आइडियाज आई वांटेड टू बी एन एक्टर. My first 3 films I played supporting roles, but वो experiences बहुत ही amazing experiences थे, learning experience थे मेरे लिए. Actually गुजारिश के shoot के बाद मुझे पता चला actually कि मुझे acting करना है. तो I never came into the industry feeling like I wanted to become an actor for sure. It took its own time, but it's worth the wait. So I'm happy. Yeah. Hi Pariniti. This song Hello. has Pariniti just है. played. Which song? Pariniti. जी, hi. Hi, I'm Tanya from Gulistan News. Hi. परिणीति, हमने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें आपके किसी फ्रेंड ने बोला था कि अगर किसी लखनवी फूड के बारे में जानना है, डिटेल चाहिए, तो परिणीति से लो. बिरयानी को छोड़ के कौन सा लखनवी फूड ऐसा है जिसके बारे में आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगी? एक्चुअली मुझे लखनऊ की बिरयानी इतनी पसंद नहीं है जितनी मुझे हैदराबाद की बिरयानी पसंद है. सो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हाफ करेक्ट है. एंड द रीज़न ही मस्ट हैव सेड दैट इज़ क्योंकि इशकज़ादी के टाइम पे मैं 3 महीने लखनऊ में रही थी, एंड नाउ फॉर 1 month. तो काफ़ी अपनी ज़िंदगी मैंने आई थिंक लखनऊ में अब गुजार ली है. बट आई लव्ड टुंडी के कबाब which I introduced Aditya to, and we were then having it every single day. Yeah, Tunde Kebab became our caterers. So yeah, it was good. So any time, in fact इतना हो गया था कि हम उनको फ़ोन करते थे और बोलते थे हम 20 मिनट में होटल पहुँच रहे हैं तो आप भेज दीजिए. तो हमारा टाइमिंग और टुंडी कबाब का टाइमिंग एक हो गया था. It was that bad. But yeah, टुंडी के कबाब I would say was my other favorite. Any of you guys are coming with us on this trip? Anyone? Any of you coming? Oh, this is a good question. Who wants to come? Put their hands up. Acha, one Great. person. One person is We're coming. not that Oh, bad company, two. huh, guys? 3, 3, 4, 4, 5, acha, 6, 7, 8. Okay. Awesome, guys. You really must come. Seriously, if you guys Okay. have the time, So we'll just send you come. the quotes for the Innova and the money and the hotel rooms. You just book it for yourself. No, seriously, it's going to be a lot of fun. So if any of you want to join, just tell us and you can come. We are also very excited. Yeah. Really excited to go, actually. G. Next question. Hi, you guys are going to take a road trip, but recently, unfortunately, there have been floods in Jammu and Kashmir. What would you have to say about that? Would y'all like to contribute and probably help in your own small way? Yeah, for sure. We'd love to help always if there's a way. I think these things should be made easier to do almost. I would love to help about so many things, but I just don't know how to go about it. If it was as simple as the way you're putting it, both of us are bang in the middle of our promotions right now. We barely have any time to do anything. But if there is a way that we could help that is feasible within the time frame that we have, for sure. I don't think we're going to be going up there. But if the question is if you would like to help, yeah, definitely. Pariniti, what about you? What would you have to say about the calamity? I mean, I can only offer my emotional support right now. It's the most that I can do, and any kind of help. If, like you said, we don't know how to go about it. That's absolutely right because we are sitting here. But anything that we can do, if we learn about it, we will do it. Great, thank you. हाँ मैम, yes. किस शहरों में जाएंगे आप? वहाँ का क्या क्या खाना पसंद है आपको? वो हम डिस्कवर करेंगे आई थिंक ऑन द वे कि क्या पसंद है क्या नहीं. तो उन शहरों के बारे में आपने कुछ तो सुना होगा कि यहाँ के डिशेस फेवरेट है ये, जैसे अहमदाबाद का ढोकला हो गया या जयपुर का आई थिंक लाल मास. Yeah, there are few places and few things that you know. Of course, some of the cities, of course, only 3 But cities we don't are know here. exactly where we're going. We know only a few cities. We know only a few cities. Correct. So, like I said, we're starting from Bombay. हम लोग अहमदाबाद जाने वाले हैं, बड़ौदा,
आगरा, जयपुर, Delhi, Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, Delhi, Chandigarh. So there are lots of cities. I hope I remember. I think there are more, na? There are many more. But of course, these cities have also हमने shortlist इसलिए की है क्योंकि कुछ ना कुछ famous है. So for example, अगर हम दिल्ली गए तो दिल्ली में आपको पता है आपको पराठे और बटर चिकन और दाल मखनी मिलने वाली है. अगर हम चंडीगढ़ जाएंगे तो सेम. चंडीगढ़ तो मैं इतनी अच्छी तरह जानती हूँ तो मैं सबको लेके जाने वाली हूँ. बॉम्बे से हम लोग शुरू करने वाले हैं, राइट फ्रॉम वड़ा पाव टू कैफे मद्रास. अहमदाबाद, आई लव गुजराती फूड. सो हर सिटी में कुछ ना कुछ है जो लाइक मेरे मुंह में एट द मोमेंट पानी आ रहा है एक्चुअली जब मैं बात कर This रही हूँ. trip is going to be very It's dangerous. a crazy. So we are very excited, as you can see. We are really excited. We can't wait to leave. परिणीति हाय हियर. आप ऑलरेडी अपने वेट को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म फेस कर चुके हो या Ah, yes, yes. Hello. हाय फेस कर चुके हैं. ऐसे में आपको लगता है इट्स अ गुड आइडिया टू अटेंड दिस ट्रिप एज एन एक्ट्रेस? As you can see कि लोगों ने हंस दिया है आपके सवाल पे ही, तो मुझे आंसर देने का ज़रूरत नहीं है. I think it's ridiculous. I'm sorry, but this question is ridiculous for me because I've done a film called Dawat-e-Ishq, and for me, I think it's ridiculous to say that a food trip won't be correct for this film. I'm sorry, but that question I didn't like much. Having said that, अगर मैं खाना खा रही हूँ, that doesn't mean I'm not going to the gym after that or doing something about that. So I think it's very disrespectful of you to ask this question. I think it's the best marketing plan we have for this film, and I'm definitely going on that trip. बट आई मीन मेरा कहने का मतलब वो नहीं था. यू नो दैट एक्ट्रेसेस अपने वेट को लेकर अपनी बॉडी को लेकर बहुत पर्टिकुलर होती हैं. तो जी. आई मीन यू डूइंग ग्रेट थिंग फॉर द फिल्म. आप जो कर रहे हो जी, अगर मैं इतनी कॉन्शियस होती तो शायद मैं ये पिक्चर ना करती. I think I'm just staying true to the film, and if I put on a little more weight, I'll go back to the gym and I'll shed it off. So please don't be worried. या ऑल द बेस्ट. मैम मैम आपने इतने सालों में इतनी अच्छी और इतनी अलग फिल्में की है. ये बताइए कि आप आगे जाके और आपकी विश लिस्ट में और कैसे एक्टर किन एक्टर के साथ आप काम करना चाहती है? शाहरुख सर, सैफ अली खान, कौन? या मतलब मैं बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम करना चाहती हूँ. आई एम ग्लैड दैट ऑलरेडी आई वर्क विद सच कूल एक्टर्स. But my next film is with Ranveer, which is Kill Dil, and then after that a film with Saif. But yes, I would love to work with Shah Rukh Khan. I would love to work with Salman. I would love to work with Ranbir. I really love Ranbir. I would love to work with Shahid, and I'd love to work with all of them again. Yeah, Even I'd love to work with them actually. Seriously. Yeah, I'd love to work with them also again. हाय परिणीति, दिस इज़ अमित भटनागर फ्रॉम सोच मैगजीन. हमें पता चला है कि आप अम्बाला से बिलोंग करती हैं, तो आपका ये दावत-ए इश्क का जो सफ़र है अम्बाला नहीं जाएगा क्या? I'm so dying to go. They should. Are we going to Ambala? I'll let you know. Marketing team कहाँ है? I would love to go. मतलब मेरी मम्मी को पता चलेगा आज तो डेफिनेटली मुझे आज रात को फ़ोन आने वाला है कि तुम लोग अम्बाला आ रहे हो कि If नहीं. we're going, then we should. We have to go. We have to go. Come on. इंडिया के मैप में फेमस हो जाएगा. है ना? बिल्कुल. Hi Aditya, hi Pariniti. Here. Is this your first road trip or have you done other crazy road trips? Not on the professional front per se, but maybe. Yeah, I've done a couple of road trips actually, and they're a lot of fun. Why are you laughing at my? I say I've done a lot of road trips. They're laughing at me. Seriously, yeah, I've been on a couple of road trips, and they're a lot of fun. The ones that I've been for haven't ever been planned, and I think that's the fun of it, where you just go and you stay as many days as you want, wherever you want, and it gives you the chance to suddenly take a detour, suddenly stop where you want. It really gives you a sense of freedom, and you're in control of your destiny and your trip completely. It's all in your hands. The place, of course, it's ideal to go to a place where your roads are good, so that you're not going through that's the fun of it. Like driving in potholes is not going to be fun at all. That we get enough of that in Bombay. So I think the roads to where we are going are good as well. So it's excited about that. And this time it's going to be double the fun, yeah, because there's food involved, and that is the best thing. हाँ, मैं खुद 2-3 ट्रिप्स कर चुकी हूँ, बट वो थोड़ी ज़्यादा प्लान्ड थी इस रोड ट्रिप से भी, क्योंकि वी न्यू एग्जैक्टली वेयर वी वर स्टॉपिंग व्हेन. लेकिन यहाँ पे तो आई थिंक वी आर जस्ट गोना लीव, एंड देन जहाँ पर भी हम लोग रात तक पहुँचे
we're going to stay there, and then next day we'll get up and we'll just leave. So we're going to like kind of leave things to chance, which is very exciting. But I have been on road trips and it was very cool. क्योंकि आपको पता नहीं होता है आप रात तक कहाँ पहुँचेंगे, आप कहाँ पे लंच करेंगे, कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे. It's really cool. मतलब और कोई ऑप्शन नहीं होता है but to just keep driving. So I'm very excited to drive also actually. As opposed to I'm some not excited people about who driving. think that girls can't drive. I don't want I to, will be driving a lot on this trip. I don't want to find out the hard way that girls can't drive. So let's see. We'll You will be sitting in that car with me and you will see my talent. take a sleeping pill or something. या डोनाल्ड दिस साइड क्या आप परिणीति को डेट पे लेके जा रहे हैं फॉर द रोड ट्रिप wherever you will go? एक 7 दिन का date. I think that will be a bit much. It's a great long date. I think You're an ambitious it'll be a person. 7-day performance, huh? नहीं, I don't think ये date है. आपको लग रहा है कि मैं उनको date पे लेके जा रहा हूँ? जैसे And I एक made ये it a love marketing story event. है. It would be the world's coolest date, huh? Yeah. World's If I coolest call the and press and I say, अच्छा मैं परिणीति को एक date पे लेके जा रहा हूँ, please Come with us. come with us and This is shoot the it. least privacy that we'll have. नहीं हमारे साथ It's a कुछ serious question. 60-70 और लोग जा रहे हैं तो it's hardly going to be a date actually. It's going to be a mass date. Hi Pariniti, Hi. this is Ketan. Hi, sir. What is your most memorable dawat till today? You remember I've had many actually. I'm actually very bad at giving parties or hosting dinners. मैंने actually कभी नहीं किया है. Somehow I've always been that person who's gone to other people's houses for dinner or parties. But I've not given dawats really. So I think it would have to be some memorable birthday party or dinner that I've gone to somebody's house. I don't think I have given any great dawats till this film. परिणीति, hi, सामने. Hi. Everybody knows why they're laughing. You don't know this. परिणीति, मैंने notice Hi. किया पहले तो मुझे hi Because बोलो. of him. Hi. Huh? He's famous. Hi. He's very famous. Great person who's gotten scolded by me. He's the person. क्या हुआ? कुछ मैंने नहीं. तो कुछ सवाल भी नहीं पूछा. Back story सुन रहा हूँ मैं. ओके परिणीति, मैंने नोटिस किया कि जब भी आप किसी इवेंट पर आती हैं तो काफ़ी एनर्जी पूर्ण होती है और एक एटीट्यूड जो होता है वो आपका काफ़ी बबली और नॉटी वाला होता है. तो मैंने Bubbly सुना has है. been said. Bubbly has been हाँ, गुस्सा आ uttered. गया. और मैंने naughty सुना भी है है. कि जब भी कोई आपको बबली बुलाए, नॉटी बुलाए तो गुस्सा आता है. ऐसा क्यों? आप हो बबली तो लोग बुलाएंगे ना. Don't be naughty. It's hurting me. My heart is hurting. मैं बुला पब्लिक, कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होगा, बोलो. नहीं. Pari, you're so bubbly. Say thanks, say thanks. There. देखा? Okay, अब मैं इसलिए मुझे बबली वर्ड पसंद नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बबली जैसा कोई शब्द है नहीं. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स को बबली बोलते हैं, हम शैम्पेन को बबली बोलते हैं, लेकिन किसी इंसान को बबली नहीं बोला जा सकता. दैट्स व्हाट आई थिंक कि आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं खुश मिजाज की हूँ या एंथुजियास्टिक हूँ या हैप्पी हूँ या चेयरफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ, जो भी अच्छे वर्ड्स हैं आप प्लीज़ यूज़ कीजिए. लेकिन आई डोंट थिंक आई एम बबली. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आई एम एन एक्सप्रेसिव पर्सन. दैट्स इट. आदित्य, आपको क्या लगता है? इफ यू कॉल मी अगर कोई मुझे बबली बुलाए? नहीं, परिणीति आपको. देखिए, I personally, genuinely, I have no problem with the word bubbly, but ma'am को problem है तो we should respect it. No, not bubbly, not bubbly. Okay. It's been cleared, boss. Okay. I'm not bubbly. Please, I can't be bubbly. Please, let's take a vote on this. There's no word like Okay, bubbly. chal. Who thinks Pariniti is bubbly? Yes. Yeah! Hey, well done, guys. Well done. Hey, one person has said, no dinner for you. No, I'm sorry. This can't happen. Yes, thank you guys. You can call me enthusiastic, whatever you want, but please not this bubbly. This bubbly is a bad word. किसी इंसान पे तो नहीं. बंटी और बबली. वो वाला बबली. BABLI. हाँ, वो आई गेस बंटी और बबली में थी, लेकिन
आई डोंट थिंक किसी इंसान को बबली बोलना चाहिए यार. इट्स नॉट अ ग्रेट वर्ड. Point noted. बबली बदमाश. Bubbly बदमाश भी है? My sister is bubbly badmash. Wrong? It's a very technical thing. No, BUBBLY. वो नहीं बोल सकते. वो allow ban कर चुकी हूँ मैं. Okay. You can move on from bubbly. You can close. Close. Okay, so last dawat to you all. Please, if anybody wants to join, you're more than welcome. Please join us in this crazy trip. We also don't have any idea where we're going, but otherwise, see you on September 19th. Thank you all for coming. Yeah, Thank thanks you a lot. guys. Thank you.